नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज की हमारी जो वीडियो है ये है पार्ट 19 द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग विक्टोरियन एज को कवर कर रहे हैं, 19th सेंचुरी को। एंड ये हमारा विक्टोरियन एज के ऊपर पार्ट 3 है आई गेस, या पार्ट 2 है। तो आज हम लोग विक्टोरियन एज को कवर करेंगे, कल भी विक्टोरियन एज को ही कवर करेंगे क्योंकि विक्टोरियन एज इटसेल्फ अ वेरी वास्ट टॉपिक। ठीक है, तो कल तक आई थिंक ये खत्म हो जाना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियोस। हमारा पहला क्वेश्चन है, which character is used to illustrate the use of dialect for comic effects in Dickens novel? Sam Weller. Okay, next, what does dialect often symbolize in the novel Elizabeth Gaskell and Thomas Hardy? Dialect क्या symbolize करती थी इन दोनों के novels में, Elizabeth Gaskell and Thomas Hardy के novel में? So dialect symbolizes conflict between social classes. Okay, next. Which novel by George Eliot tries to bring different speech communities into greater social harmony? Philip Hall, The Radical. Next, which subgenre did Harriet Martineau, a Manchester sprite, belong to? Industrial novel. This novel is an industrial novel and written by Harriet. Okay, next. What significant contrast does Elizabeth Gaskell's North and South highlight? So the correct answer is industrial North versus rural South. Okay, next. What is the main theme of Samuel Butler, The Way of All Flesh? So the correct answer is satire of Victorian family life. This work's main theme is satire of Victorian family life, and this work is written by Samuel Butler. Okay, identification based questions आ सकते हैं इस पे, ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट, which writer work are noted for the detailed record of real suffering contributing to people awareness of social reforms? Henry Mayhew. Okay, next. Who among the following wrote a significant collection of stories titled The Untitled Field? George Moore is the correct answer. Okay, next. Which genre became popular in the second half of the 19th century, reflecting the escapist search for other worlds? Fantasy writing is the correct answer. Okay, next. नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वाइल्ड एंड एस्थेटिज्म। वाइल्ड से यहाँ मेरा कहने का मतलब है ऑस्कर वाइल्ड एंड एस्थेटिज्म, यानी कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती है उसको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं, जो हमारी आंखों को मिसमराइज कर दे, ठीक है, और हमारे अंदर कुछ अच्छी फीलिंग्स ला दे, तो उसको हम लोग एस्थेटिक चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड ने यहाँ पे एस्थेटिज्म में अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ पे वाइल्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस। ठीक है, और ये कोट ऑस्कर वाइल्ड ने अपने प्रीफेस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये राउटलेज की बुक में मेंशन था इसीलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, which statement summarizes the core belief of aesthetic movement as expressed by Oscar Wilde? Option number B is correct. Art should be appreciated for its own sake, without moral and utilitarian consideration. देखो, एक आया था आर्ट फॉर लाइफ सेक, देन आया हमारा आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर लाइफ सेक में जो था उसमें लोगों ने बोला, राइटर्स ने बोला कि हम लोगों को आर्ट में मोरल और फिर डायरेक्टिज्म को लाना चाहिए। लेकिन बाद में जब वाइल्ड आए तो उन्होंने बोला कि आर्ट को आर्ट ही की तरह से देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसमें हम लोग मोरल और फिर जो भी एथिक्स ये सब को हम लोग उसमें नहीं डाल सकते, एक आर्ट को आर्ट के ही तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इनका। और ये जो था तो इसमें ये लोग थे एस्थेटिज्म मूवमेंट में, इसमें ये लोग का फेमस कोट था आर्ट फॉर आर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, which book by Matthew Arnold is mentioned in the context of the
aesthetic movement in search for constant. So culture and anarchy. ओके, मैथ्यू आर्नल्ड जो थे वो कहते थे आर्ट फॉर लाइफ सेक, एंड ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पेटर, ये लोग बोलते थे आर्ट फॉर आर्ट सेक. ठीक है, नेक्स्ट. हु इंट्रोड्यूस द फ्रेज द डिजायर ऑफ ब्यूटी, द लव ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वॉल्टर पेटर. ठीक है, नेक्स्ट. द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, what changes Dorian indulges in sensual pleasure? So his portrait, उसकी जो पोर्ट्रेट है उसमें चेंजेस आने लगते हैं. अगर आप लोगों ने पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लो, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है नेट एग्जाम का. मतलब यूजीसी काफी बार इससे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है हार्डी एंड जेम्स. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इन थॉमस हार्डी नॉवेल द फिक्शनल कंट्री साइड ऑफ वेसेक्स इज बेस्ड ऑन विच रियल लोकेशन? सो एज यू ऑल नो, हार्डी अपने नॉवेल में एक फिक्शनल कंट्री साइड वेसेक्स को इंक्लूड करते थे. तो वो वेसेक्स किस कंट्री साइड पे बेस्ड था? तो वो था डॉर्सेट. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो वेसेक्स का जो फिक्शनल जो ये टाउन है, तो इसको हार्डी ने उठाया है डॉर्सेट टाउन से. ठीक है, What event in Jude the Obscure is considered one of the most tragic scenes, highlighting the character Jude Fowley's plight? So the death of Jude's children. What is the central theme? Hardy's test of the D'Urbervilles. So consequence of rigid sexual morality. What does Hardy novel The Mayor of Casterbridge reflect? Classical form of tragic drama. So by showing the protagonist rise and self-caused fall. Okay. Next, which Hardy novel features the character Jude Fowley, who is kept from achieving his ambition, poverty, marriage and family? So Jude the Obscure is the correct answer. Next हमारा सब टॉपिक है लैंग्वेज नोट, डायलेक्ट एंड कैरेक्टर इन हार्डी. ठीक है, which of the following novels by Thomas Hardy features the character Tess Durbeyfield? So Tess of the D'Urbervilles is the correct answer. Next, sorry. What is the primary characteristic of the speech differences in Hardy's novels? So they distinguish characters, social positions and emotional states. What concept introduced by William James is closely associated with Henry James narrative techniques? So stream of consciousness. मैंने आप लोगों को एमएच अब्राहम्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है. जिसने मेरी वो एमएच अब्राहम्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, प्लीज जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स को कवर कराया है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. बहुत सारे क्या, मैंने पूरी बुक को एमसीक्यूज के फॉर्म में कवर करा डाली है. तो प्लीज जाके एक बार देख लेना. In Hardy's view, what is the significance of dialect? So it is a distinct branch of Teutonic speech, rich in vocabulary. Okay, next. Which novel by Henry James is known for being told most entirely from a child perspective? So What Maisie Knew is the correct answer. Next. Which novel by Henry James explores the theme of art and its impact on life? So The Golden Bowl is the correct answer. Next. What was the societal reaction to Hardy's novel Tess of the D'Urbervilles and Jude the Obscure? So they were burned, banned and denounced. हार्डी का जो ये दोनों वर्क है ना, ये दोनों को पब्लिकली जला दिया गया था, बैन कर दिया गया था. ठीक है, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं था. इसके बाद हार्डी ने सोचा कि वो अब पोएम लिखेंगे. ठीक है, तो इनकी जो ये दोनों नॉवल जो बर्बाद हो गई, तो इसके बाद इन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया था. विक्टोरियन पोएट्री. इट्स melancholy long withdrawing roar. So this line is from Dover Beach by Matthew Arnold. What is the title of Tennyson key work that is an elegy on the death of his friend Arthur Henry Hallam? One of the most important question. So the correct answer is In Memoriam A. So ये जो है ये elegy है
ठीक है, ये वर्क एक एलेजी है, टेनिसन ने लिखा है अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, which poem by Tennyson is described as giving a first person voice to stream symbolizing eternity? So the brook. Next, in Tennyson's In Memoriam, how is nature described? So red in tooth and claw. Next, which poem by Tennyson commemorates a futile movement of heroism during the Crimean War? So the Charge of Light Brigade. This is also a very important question. Next, which Victorian poet is known for developing the dramatic monologue to its greatest height? So रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया था विक्टोरियन पोएट्री के टाइम पे। In which poem by Robert Browning does the speaker reveal having his previous wife murdered? So My Last Duchess is the correct answer. इसकी ना एक बार जाके पोएम पढ़ना, बहुत अच्छी पोएम है। एंड इसमें क्या होता है, एक किंग रहता है, वो अपनी वाइफ को मार डालता है। ठीक है, पूरे पोएम बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है और उसका जो स्टैंजा है उससे आप लोगों को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइन दे दिया और आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि ये किस पोएम का है। ठीक है, नेक्स्ट, विच पोएटिक technique does Tennyson use to make an appeal to the emotions of reader as in Tears Idle Tears? So emotive expression is the correct answer. What is the characteristic tone of Victorian poetry as it moves closer to the 20th century? So despair is the correct answer. Next, which poet work incorporates a nostalgic heroism reflecting late Victorian ethos and includes the line, the old order changeth, yielding place to new? So Alfred Tennyson is the correct answer. Next, in Child Roland to the dark town came. Who is Child Roland? So an apprentice knight. Which Shakespeare play provide the title and last line Browning Child Roland to the dark tower came? So King Lear. The Ring and the Book by Robert Browning is known for its use of which literary form? So dramatic monologue. रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आए तो समझ जाना ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना बस। Elizabeth Barrett Browning Aura Lay is best described as a novel in verse. Okay, this work is in novel in verse. Okay, next. In which year was Darwin's or On the Origin of Species published? So it is 1859 and ये question 2022 CUET PG में पूछा जा चुका है। ठीक है, next. Edward Fitzgerald translation The Rubaiyat of Omar Khayyam is noted for capturing mood of escapism. Okay, next. Which poem by Matthew Arnold is known for its theme love, faith and desolation? So Dover Beach is the correct answer. Next. In Dover Beach, Arnold uses the imagery of the sea to symbolize endless sadness. ठीक है, next. Elizabeth Browning's sonnets from the Portuguese are presented as translating but are actually about her love for Robert Browning. ठीक है, इन्होंने ये सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज लिखी थी अपने लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए, बट इनके पापा को पता ना चले कि इनका कोई लवर भी है, तो इन्होंने ऐसा बोला पब्लिकली कि ये वर्क किसी और वर्क का ट्रांसलेशन है, लेकिन ये असली में ट्रांसलेशन नहीं था, ये इनके लवर के लिए लिखा था इन्होंने। ठीक है, सो बात को छुपाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला था। नेक्स्ट, which Victorian poet's work anticipates theme of the 20th century wasteland? So Matthew Arnold is the correct answer. Which poem by Gerard Manley Hopkins यानी कि G.M. Hopkins best describe the death of 5 nuns during shipwreck? The Wreck of Deutschland.
In Culture and Anarchy, Matthew Arnold characterizes society into three groups. Which of the following is not one of them? So, elites. Elites is the correct answer here. Okay, next. What is the main subject of Thomas Hood's poem, The Song of the Shirt? So, the struggle of poor women at work is the correct answer. Next. Which Victorian poet is known for the lines, "Each man kills the thing he loves"? So, Oscar Wilde. Okay, next. Sorry. Who among the following was not a member of the Pre-Raphaelite Brotherhood? So, Swinburne is the correct answer here. Next. The poem Dover Beach by Matthew Arnold reflects what main theme? So, its theme is the decline of religious faith and the resulting sense of despair. Okay, next. What type of rhythm did G.M. Hopkins develop in his poetry? So, of course, this is sprung rhythm, and this question has been asked in CUET PG 2022 exam. Okay, next. The term fleshy school of poetry was used to criticize which poet? So, Dante Gabriel Rossetti is the correct answer. Okay, next. Which poet by Matthew Arnold begins with the line, "The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair"? So, डोवर बीच. ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड की जो डोवर बीच है ये बहुत 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 ज्यादा फेमस पोएम है, एंड आप लोगों को इसको एक बार लाइन बाय लाइन रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए. ठीक है, नेक्स्ट. In The Bliss Damosel, which flower is symbolically by Dante Gabriel Rossetti? So, white rose. Next. अब लैंग्वेज नोट पे थोड़ा देख लेते हैं, द डेवलपिंग यूज ऑफ डायलेक्ट्स इन लिटरेचर. ओके, so which Victorian poet prominently used local Lincolnshire dialect in the poems? So A.L. Tennyson, ये ना लोकल लिंकनशायर डायलेक्ट यूज करते थे अपने पोएम्स में. ठीक है, और ये बहुत ही महान हमारे विक्टोरियन पोएट रह चुके हैं. So, who among the following used Cockney dialect to delineate lower class London characters in Victorian novels? So, Charles Dickens. ठीक है, Charles Dickens is the correct answer. Next. Which Scottish novelist incorporated Northeast Scotland dialect in his works during the 1930s? So, Lewis Grassic Gibbon is the correct answer here. Next. Who influenced Thomas Hardy in his use of Dorset dialect in the Wessex novel? So, William Barnes influenced him. Okay, next. Which early 20th century playwright used Nottinghamshire dialect in his mining plays? So, D.H. Lawrence. Which poet wrote Northern Farmer New Style using dialect to depict a farmer views on the property and marriage? So, A.L. Tennyson is the correct answer here. Next. Which literary movement emphasized the use of local dialects to depict the scene of everyday life? So, realism. Okay, next. I think यहाँ W छूट गया है. Which author from pre-Raphaelite Brotherhood used dialect to connect with the medieval English in his poetry? So, Dante Gabriel Rossetti. ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो गया. एंड हमारी जो ये वीडियो ये यहीं पे खत्म होती है. कल हम लोग विक्टोरियन एज को थोड़ा और देख लेंगे. विक्टोरियन एज का ड्रामा अभी बचा हुआ है, हम लोग को उसको कवर करना है. ठीक है, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कल उसको खत्म कर ले विक्टोरियन एज को. नेक्स्ट हम लोग आगे मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न ये सब पढ़ना है. ठीक है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना. बड़ी मेहनत से एक एक वीडियो बना रही हूँ गाइस. आप लोगों से प्लीज मेरी विनती है कि सब्सक्राइब कर दो
एंड लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।